Hello everyone, welcome to Sri Academy. I'm Srijan and today we are going to start a very important series. That is, we will cover the mathematics part for all your upcoming competitive examination. So without making any delay, let's start. Let us start with the basic foundation. ठीक है, जो भी हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक से हम लोग धीरे धीरे लेवल अप करेंगे. ओके, तो ये to more higher level. Okay, but slowly we will start with the basics. So let us start with the very basic of mathematics, that is the number system. In this lecture or in this session we will discuss about the number system, the classification of numbers and everything about numbers. Okay, so this will be the first video of your number system. So I hope you will enjoy the video. और अभी तक आप लोगों ने अगर like नहीं किया है then like this video, also share it with your friends who are preparing for any competitive examination. So let's start. So what will we learn in this session? We are going to learn about your classifications of numbers as well as everything about numbers. Okay, so let us start by looking at some of the examples of different kinds of numbers. Okay, here we have examples of different kinds of numbers. जैसे 2 हो गया, 2 is your positive number, right? 2 is a positive number. This -5 is your negative number, right? Here 3.42 क्या है, ये decimal number, right? It's a decimal number. If we talk about -2.666, it's a negative decimal number. ठीक है, this 4.181818 here 18 is being repeated, right? So हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.185. Okay, that means it's equal to 4.1811818. This 18, 18 is repeating for infinite terms. Okay, infinite times. So root 2 क्या है, real number. Okay, root 2 is a real number. This, what is this? -5 root 5. Okay, we'll discuss everything. Okay, different types of numbers. Just for the example, एक बार देख लीजिए, हम लोग का नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स होते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. So let us start with the very basic broad division. Okay, broad division, that is your real and imaginary number. If we will divide at the top, okay, अगर हम लोग देखें एक नंबर्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इन ए ब्रॉड कैटेगरी. ओके, वी कैन डिवाइड इट इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. दैट इज, एक है रियल नंबर, एक है इमेजिनरी नंबर. ओके, just remember real numbers क्या क्या होंगे. real numbers will discuss everything. Okay, what is real number? Okay, what is imaginary number? Imaginary number, you remember, जहाँ पे imaginary है there is iota I. Okay, जहाँ पे I होगा वहीं पे imaginary numbers होता है. Okay, let me give you a simple example of imaginary number. It is your -1. minus root 1 is your imaginary number. ठीक है, जो -√1 होते हैं वो क्या होते हैं, imaginary number होते हैं. Okay, so real numbers, let us say real number is, suppose what happens is, अगर हम लोग ने ये रियल और इमेजिनरी को अगर हम लोगों ने कंबाइन कर दिया. ओके, सपोज वी कंबाइन दिस रियल प्लस इमेजिनरी नंबर. ओके, उस केस में वी गेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस. ठीक है, कोई भी मतलब जैसे योर बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन या यूपीएससी वगैरह भी हो गया, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पूछते हैं. बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके, व्हेनेवर वी डू समेशन ऑफ real and imaginary number, we get complex number. Okay, let me give you an example. That is, suppose a, here a is what, a real number. Okay, a is a real number. Suppose a plus bi, bi यहाँ पे आई लग गया, आई लग गया मतलब आयोता आ गया, आयोता आ गया मतलब ये इमेजिनरी. ओके, सो इन दोनों का समेशन जो है वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, ओके, जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, सो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके क्या होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके दोनों अगर सम करें तो इक्वल टू वी गेट कॉम्प्लेक्स. ओके, complex numbers का example, that is your a plus bi. Okay, where a is your real number and your bi is your imaginary number. Okay, just remember this. Okay, we'll discuss what is real number and what is imaginary number. धीरे धीरे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे. So let's move.
next. Okay, let's see what is real number. Okay, I know you know the definition of real number, very simple, हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, we have learned in our school also, right? That it is the numbers which can be expressed in the form p by q, where p and q are integers but q not equal to 0. हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, राइट? रियल नंबर्स क्या होता है? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p and q, ठीक है? where p is an integer, q is also an integer, okay, and value of q is not equal to 0, ठीक है? अगर ऐसा है then it becomes your rational number. okay, I know you know the definition, हम लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा है rational number के बारे में. The number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers but q not equal to 0. okay, where p is an integer and q is an integer, okay, and q is not equal to 0, ठीक है? This is the very definition of your rational number. okay, let's see some examples of rational number, ठीक है? rational numbers का थोड़ा example देख लेते हैं. For example, suppose let me give you an example. 3. okay, 3, how can we write 3? We can write the 3 as 3 by 1, है ना? So 3 क्या है? एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है. ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q, right? This is p, this is q, they both are integer, and q which is equal to 1 is not equal to 0. Therefore 3 is your, क्या होगा? 3, 3 आपका rational numbers होगा, है ना? right? So let's see one another example. okay, let's see one another example. Let us see one another example. That is, suppose I give you an example of 2.3. okay, 2.3. Now tell me, is this a rational number or irrational number? It's also a rational number. ठीक है? ये rational number क्यों है? You might be thinking that हम लोग ये p by q के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, but we can write in p by q form. कैसे लिख सकते हैं? We can write it as 23 by 10, right? 23 by 10 भी लिख सकते हैं हम इसको. ये 23 क्या है? ये एक इंटीजर है. ये p, सपोज लेट्स टेक इट p, दिस इज नीचे वाला भी ये q है ना? एंड q जो थी 10 है, इट्स नॉट इक्वल टू 0. therefore 2.3 क्या होगा आपका? 2.3 will also be a rational number. okay, I hope it's clear what is rational number. ठीक है? अभी देखते हैं irrational numbers. okay, what do you mean by irrational numbers? Let's see what is irrational numbers. okay, in irrational number we cannot write it in p by q form. okay, let me give you an example. जैसे कि ये आपका हो गया 23.45454545 डॉट 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 डॉट. ओके, किसका है? 4 5 का है ना? 4 5 4 5 4 5 4 5. इट्स नेवर एंडिंग. ओके, इट विल कैरी ऑन. सो ऐसे टाइप का नंबर्स को हम लोग p by q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं. सो these numbers, okay, that we cannot write in p by q form, where p and q are integers and q not equal to 0. ऐसे टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? irrational numbers. okay, what do we call? irrational numbers. ऐसे टाइप के नंबर्स को हम लोग irrational number बोलते हैं. now very simple. okay, I'll ask you a question, I'll give you 5 seconds to answer. okay, you know the pi we use in mathematics, right? pi, p-i-e, pi. is pi a rational or irrational number? ठीक है, आपका एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं. पाई का वैल्यू आपको पूछा जाएगा सिंपली, इज पाई ए रैशनल और इरेशनल नंबर, एंड यू नीड टू रिप्लाई इन यस और नो. ओके, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. सो इज पाई ए रैशनल और इरेशनल नंबर? आई विल गिव यू 5 seconds to answer. Come on, answer me this. Is pi a rational or irrational number? The answer is no. Pi is not a rational number. Okay, it's irrational number. Like you might be thinking, कैसे irrational? I mean, कैसे irrational number हो गया? Right, pi. So the value of pi is 3.14 dot 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 dot. It's a never ending number. Okay, so मतलब
इसका जो वैल्यू है वो खत्म ही नहीं होता है. सो दिस पाई इट फॉल्स अंडर द irrational number. But wait. This pi, we know that this pi is also written as 22 by 7. Okay. But this 22 by 7 is not the exact value of pi. Okay. ये जो 22 by 7 है, this is the approx value. Okay. It is the approx value of pi. ठीक है, ये 22 by 7 नहीं है. Actually pi का value 3.14 डॉट 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 बहुत बड़ा एक वैल्यू है. Okay, never ending value. But क्योंकि in order to remove complications from mathematical calculations, so we use 22 by 7 instead of your that 3.14 dot 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 dot. Okay, just to make it simple. But this 22 by 7 जो कि approx value है pi का, this is a rational number. Okay, this is a rational number. Why it's a rational number? Because 22 is an integer, 7 is also an integer. ये 22 आपका हम लोग लिख सकते हैं p के फॉर्म में, ये 7 हम लोग लिख सकते हैं q के फॉर्म में. और 22 is not I mean q is not equal to 0 है ना, 7 0 नहीं है. So pi may not be a rational number, but its approximate value 22 by 7 is a rational number. I hope it's clear. Okay, so let's move to the next thing, that is number line. Okay, number line is very important. Just look at this number line. Okay, number line से ही हम लोग को number system सीखना पड़ेगा. Okay, so what is this number line? देखिए number line divide होता है बीच में. Okay, बीच में we have zero. Okay, where is this zero? So zero is at the center. Okay, zero is neither positive number nor negative number. Okay, zero के left side में जो numbers होते हैं, that means this left side, these are your negative numbers. Okay, and zero के right side जो numbers होते हैं, they are your plus positive numbers. Okay, they are your positive numbers. Okay, this number line. Okay, zero के बाद left side में क्या आएगा? -1, फिर -2, -3, -4, dot 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 dot. It will continue till -infinity. Okay, -infinity तक ये लंबा चला जाएगा. And zero के plus side में, if we talk about the right side of zero, we have all the positive numbers. That is your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, all the positive numbers, and it will go to infinity. Okay, so the number line basically it ends it in the left hand, and we will have the negative minus infinity. At the right end we will have the positive infinity, and in the center exactly we have the zero, and this zero is neither negative nor positive. Okay, I hope it's clear. ठीक है, नंबर लाइन का एक ओवरव्यू मिल गया आपको. नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स ऑल द नंबर्स. ओके, सो लेट्स मूव टू, अभी हम लोग देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज rational number and irrational number. Okay, now we will discuss what is integer, what is a whole number, and what is a natural number. ठीक है, so we already discussed इस साइड में क्या है, माइनस इंफिनिटी, इस साइड में क्या होगा, plus infinity. Okay, on the left hand side we have your minus infinity, and on the right hand side we have the plus infinity, right? So and in the center we have the zero. Okay, so all the numbers, okay, right from your minus infinity to your plus infinity, okay, including zero, okay, all these numbers are your integers. ओके, ऑल दिस नंबर्स आर इंटीजर्स. ये देखिए, ये यहाँ से माइनस इंफिनिटी की तरफ से जितना भी नंबर्स है, जैसे -9, 8, 7, ओके, ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग द जीरो and including all the positive numbers. Okay, all the positive numbers. Okay, everything right from here to here. Okay, all are your integers. Okay, let's take some example में जैसे -7. Okay, -7 इस नंबर लाइन में देखिए यहाँ पे है. Okay, so -7 is an integer. What about 1? 1 is also an integer. Okay, 22 by 7, 22 by 7 is also an integer, है ना. 22 by 7 का वैल्यू कितना होगा? 22 divided by 7. 7 3 are 21. We have two reminder, we have 3 point something, right? 3 point something कहाँ पे होगा? This is 3,
3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना. सो 22/7 is also a integer. Okay, all the numbers in the number line. Okay, right from your minus infinity to your plus infinity. Okay, everything is considered as your integers. I hope it's clear what is integer. Okay, now let's move to what are whole numbers. Okay, what are whole numbers. ठीक है, suppose now let's ignore this part. Okay, इस part को हम लोगों ने हटा लिया है. Suppose let's ignore this part, concentrate only on the positive part. Okay, concentrate only on the positive part. Okay, if we consider 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to infinity. Okay, to positive infinity. Okay, including 0. Okay, 0 से positive infinity की तरफ जितने भी numbers हैं, we call them the whole numbers. Okay, is this clear? Okay, ignore the negative part. If we consider all the numbers from your 0 to your plus infinity, okay, they are all your positive numbers. Oh, sorry, they are all your whole numbers. Okay, so whole number, integer is clear, right? Integers कहाँ से होंगे? From your minus infinity to infinity के अंदर से. Okay, integers will lie. Okay, this is the limit for the integer. Okay, integer हम लोगों ने देख लिया. After integers we saw whole numbers. Okay, whole numbers कहाँ से आएंगे? Whole numbers will come from your 0 to infinity. Okay, whole numbers will come from your 0 to infinity. 0 और infinity में जितने भी numbers हैं, all are your whole numbers. Okay, so let's see the third type of number, that is natural numbers. Okay, we have discussed about integer, we have discussed about whole number. Okay, so again we will ignore this part, we don't need this part. Okay, so whole number तो पता ही है, whole number starts from this 0 to your infinity. Okay, suppose from whole number we remove this 0. Okay, तो हम लोग के पास क्या बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 टिल इंफिनिटी. ओके, सो अगर हम लोग होल नंबर से 0 हटा देंगे, इट बिकम्स योर नेचुरल नंबर. ओके, इट्स क्लियर. होल नंबर से 0 हटा दो, नेचुरल नंबर. ओके, इंटीजर से नेगेटिव नंबर हटा दो, इट बिकम्स योर होल नंबर. अगेन होल नंबर से 0 हटा दो, इट बिकम्स योर नेचुरल नंबर. Okay, clear. Okay, so what we got, we saw integer, that there we have all your negative numbers comma 0 as well as your positive numbers. Okay, in integers we have the negative numbers, the 0 as well as the positive numbers. Okay, next we saw after integers we saw your whole number. And the whole numbers we don't have this negative number, right? We have only 0 and your positive numbers. Okay, and the third type of number that we have discussed is your natural number. In natural numbers, we don't even have the 0. Okay, whole number से 0 हट गया, we have only the positive numbers. Now the question is for you, which is the smallest natural number? The answer is the smallest natural number is 1. Which is the smallest whole number? The answer is 0. So let's move. Let us discuss about integers. Okay, what do you mean by integers? Okay, integers अभी not this, therefore so the integer consists of your negative numbers,
Okay, the integers consist of your negative numbers, the integers consist of your whole numbers as well as the natural numbers. Okay, that is your positive numbers. Integer consists of your this minus infinity to minus 1, all the negative numbers, whole number that is 0 to infinity, and all the positive numbers that is from 1 to infinity. Right, I hope it's clear. ठीक है, इंटीजर्स क्या क्या रखते हैं, इंटीजर्स में हम लोग का नेगेटिव नंबर्स है, होल नंबर्स है एंड नेचुरल नंबर्स है। जितने भी नंबर लाइन में हम लोगों का, जितने भी नंबर एक नंबर लाइन में हम लोगों का नंबर्स है, राइट फ्रॉम योर माइनस इंफिनिटी टू जीरो। ओके, वन वन टू थ्री फोर फाइव, इधर में क्या होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तब 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 तब। ओके, ऑल द नंबर्स, ओके, दे फॉल इन योर इंटीजर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? So now let's discuss about even numbers and odd integers. Okay, it's very simple, आप लोगों को पता ही है even integers क्या होते हैं, odd integers क्या होते हैं, but still I'll give you example. Okay, simply example से discuss करते हैं। 2 4 6 8 10 12, ठीक है, all these numbers are divisible by 2, ठीक है, divisible by 2, 2 divided by 2 we get 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, okay, 2 6 are 12, 2 5s are 10, 2 6 are 12, okay, we what we are getting no reminder, okay, ठीक है, so all the numbers that are divisible by 2 are termed as your even numbers, okay, divisible by 2, divisible by 2 are your even numbers, 2 4 6 8 10 जितने भी numbers हैं। तो odd numbers क्या है, odd numbers simple, odd numbers, if even numbers are divisible by 2, odd numbers are not divisible by 2, not divisible by 2। Let's give you an example of simple 5 7 3 जितने भी numbers हैं। Okay, let's see, 5 divided by 2, 2 नहीं जाएगा, है ना, 1 बचेगा, है ना, 2.5 कुछ ऐसा कुछ आएगा, राइट, सो 2.5 आएगा। सो वेन एवर वी डिवाइड बाई 2 वी विल गेट द नंबर्स इन डेसिमल, ठीक है, मतलब डिविजिबल बाई 2 नहीं है, इन सच केसेस वी कॉल देम ऑड numbers। okay, I hope it's clear what is odd even। okay, so now this is very important। okay, properties of odd and even integers। okay, you need to remember the properties। properties हम लोग कैसे देखते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से देखते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट वन दैट इज योर एडिशन, ए डबल डी आई टी आई ओ एन, एडिशन मतलब क्या है, प्लस, है ना, प्लस है, सॉरी व्हाट, पॉजिटिव, इट्स प्लस। एडिशन करना प्लस करना, सब्सट्रैक्शन करना क्या करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन इनटू करना एंड डिवीजन इज योर डिवाइडिंग, राइट। So first is your, suppose we have a even number plus even, what will we get? अगर दो इवन नंबर्स को हम लोग सम करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? take the help of take the help of your take the take the help of examples। ऐसे जब भी कोई प्रॉब्लम आए then you should always take the help of examples। okay, you should always take the help of examples। चलो, पहला चीज क्या है, इवन प्लस इवन, दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको कल का क्लास में समझ में आएगा, बट जस्ट कीप इन माइंड, ओके, दिस प्रॉपर्टीज। ओके, so let's see, if we sum even number, if we sum an even number plus, if we sum an even, we will always get a even number। okay, just let me give you an example। suppose we have a even number 2 plus, suppose we have 4,
what will we get? 4 plus 2 is your 6. 6 क्या होता है? 6 एक even number होता है. Okay, clear? Now suppose we have odd plus odd numbers. Okay, let's take two odd numbers. 3 plus 5. So what we get? 5 plus 3, 6, 7, 8. We have got 8. Okay, 8 क्या होता है? Even, right? 8 is a even number. So odd plus odd हमेशा क्या देगा आपको? Odd plus odd will give you even. Okay. Similarly, likewise, even plus odd will give you क्या देगा? Even plus odd. चलिए बताइए. Even plus odd will give you what? Odd number. Okay, कैसे? Let us take an example. Suppose we have an even number 2 plus we have an odd number 3. 3 plus 2 is your 5. 5 is an odd number, right? And odd plus even will also give you a odd number, right? Remember this. Even plus even क्या देगा? Even odd plus even क्या देगा? Even plus odd देगा. Odd plus even odd number देगा. Okay. Now addition is clear. Now let's move to subtraction. लेट्स सी इन सब्सट्रैक्शन अगर हम लोगों को हो गया इवन माइनस इवन. ओके, क्या देगा इवन माइनस इवन? क्या देगा? इवन माइनस इवन विल गिव यू ए इवन नंबर. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज वी हैव योर 4 minus 2. ओके, बोथ आर इवन नंबर, वी विल गेट 2. वी हैव आल्सो गॉट ए इवन नंबर. ठीक है, तो इवन प्लस इवन हमेशा इवन देगा. नाउ ऑड माइनस ऑड क्या देगा हम लोगों को? नेक्स्ट थिंग इज योर odd minus odd. Okay, let us take an odd number. Suppose we are taking 5 minus 3. Okay, both are odd. We are getting 2 equal to 2. Okay, हम लोग को क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, जो कि क्या है? 2. 2 is your even number. So, okay, so odd minus odd भी हम लोगों को क्या देगा? Even number देगा. Now let's check the third one. Third one is your even minus odd. Even minus odd क्या मिलेगा? Just take the help of an example. Let us take an example. एक even number लेते हैं हम लोग. Suppose let us take 4. Okay? No, let us take more big number. इतने छोटे छोटे में तो हर कोई कैलकुलेशन कर लेता है, थोड़ा लंबा सा लेता हूँ. Even number we suppose have 8. 8 minus, suppose we need an odd number. Odd number, let's take 5. Okay? So what will we get? We'll get 3. Okay? So it is a odd. Okay? And fourth one is your odd or minus even will give you odd. Will give you odd. Okay. So even minus even देगा, odd minus odd even देगा, even minus odd देगा, और odd minus even भी odd देगा. Okay. I hope it's clear. So the third property किसका होगा? Third property addition we have already discussed. We have discussed addition we already have discussed, right? एडिशन तो डिस्कस कर लिया. अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एडिशन डिस्कस कर लिया, सब्सट्रैक्शन डिस्कस कर लिया. नाउ विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन. ओके, विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन. पहला क्या होगा आपका? फर्स्ट वन इज योर इवन इनटू इवन. क्या देगा? थिंक 2 into 2 into 4 8 will be your even, right? 2 into 4 we are getting 8, which is a even number. है कि नहीं? है ना even? So let's move to the next one, that is odd into odd. Okay, suppose 5 into 3, we are getting how much? We are getting 15. क्या है ये? 15. 15 is your odd number, right? 15 is your odd number. So ये भी क्या देगा आपको? Odd. Okay. And third one is your even into odd. Even into odd. ये देखिए क्या देगा आपको? Even into odd क्या देगा? Even एक नंबर लेते हैं, suppose 2 into, सपोज लेते हैं 3. 3 टू जा 6. सो ये क्या देगा आपको? इवन. एंड द फोर्थ वन इज योर odd into even, which will also give you EVEN. Very important. Please note this properties down. Okay, ये बहुत helpful, बहुत काम आएगा आपको. Okay, I'm repeating once again. These properties are very important. Okay,
Just remember, okay, from your exam point of view, they are very important. So फोर्थ वाला प्रॉपर्टी क्या है, ये थोड़ा हटके है, इट्स डिवीजन. Just remember, division is unpredictable. Why it's unpredictable? आप लोग predict नहीं कर सकते. Okay, sometimes it gives some things, other time it changes. Okay, so पहला एक देखते हैं. Okay, let me give you an example. Okay, even divided by even. Okay, even divided by even. Okay, even divided by even. Suppose एक नंबर लेते हैं हम लोग कौन सा नंबर लेते हैं? सपोज 14. 14 इज ए इवन नंबर डिवाइडेड बाय ए इवन नंबर 2. ओके, तो कितना आ गया आपका? 14 टू जा वी गॉट 7 विच इज योर ऑड. ओके, लेकिन वी कैनॉट से दैट ऑड ही मिलेगा. Suppose for the same case, let's take a different example, that is, okay, last time we took 14 by 2, now let's take 16 by 2. 2 8 is 16. Now we got even. ठीक है, तो एक बार इवन मिला, एक बार ऑड मिला, राइट. सो ये जो आपका फोर्थ वाला है केस, दैट इज योर डिवीजन इज अनप्रेडिक्टेबल. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट. ओके, सो हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे. ओके, जस्ट रिमेंबर द प्रॉपर्टीज यू नीड टू रिमेंबर फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड फॉर डिवीजन इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अनप्रेडिक्टेबल. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट. ओके, डिवीजन में ये सब से हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आई होप इट्स क्लियर, राइट. सो ये जो भी हम लोग को पॉइंट्स मिला है, एडिशन अगर कम करेंगे, इवन प्लस इवन वी गेट इवन, ऑड प्लस ऑड वी गेट इवन, ऑल दिस थिंग्स. ओके, सब्सट्रैक्शन में व्हेन हम लोग do करते हैं इवन माइनस इवन वी गेट इवन, ऑड माइनस ऑड इक्वल टू इवन. ऑल दिस यू जस्ट नीड टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो वी गॉट द प्रॉपर्टीज, राइट. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. ओके, हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स देखा था. क्या है नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, राइट. इफ वी ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इन द नंबर लाइन आर योर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक जाएगा. इसमें हम लोग, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर? होल नंबर में हम लोग जीरो को कंसीडर करते हैं, बट इन नेचुरल नंबर वी डोंट कंसीडर द जीरो, राइट. We don't consider the zero. We don't consider the zero. So okay, we don't consider the zero in the natural number. ये तो आपको समझ में आ गया, right? So let's move to the next thing that you need to remember is the ये natural numbers होते हैं. ये natural numbers are basically having two types. Okay, that is your prime numbers and your composite numbers. Okay, now you need to know what is this prime number and what is this composite number. ठीक है, prime numbers क्या है? Very simple definition we have learned right from our school. Only two factors. The numbers which have only two factors, the one factor should be the number itself as well as the other factor should be one. है ना, ये इसका मतलब क्या है? सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 2. ओके, 2 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 2 इज डिविजिबल बाय 1, है ना. इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर्स है? नहीं है, राइट. ओनली टू फैक्टर्स. दैट्स व्हाई वी कंसीडर 2 एज योर प्राइम नंबर. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ओके, प्राइम नंबर का एग्जांपल तो हम लोगों ने देख लिया. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट नंबर. अगर हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स का बात करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, तो कंपोजिट नंबर का बात करते हैं. सपोज वी हैव योर 6. 6 is divisible by 2, 6 is divisible by 3, 6 is divisible by 6, है ना. 6 is divisible by 1. ओके, 2 3 is 6, 3 2 is 6, 6 1 is 6, 1 6 is 6, है ना. ये सब नंबर से डिविजिबल होता है. कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होता है? 2 से, 3 से, 6 से. सो हम लोग क्या इसको प्राइम नंबर कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स. ओके, इन प्राइम नंबर्स वी हैव ओनली two factors. Okay, that is the number itself as well as one. Okay, let me give some example of prime numbers. Prime numbers का example हो गया जैसे your 2 3 5 7. और बताइए क्या होगा ना नेक्स्ट? 11. बताइए बताइए. 13. tell me
17, 19 और क्या क्या होगा 23 और क्या हो सकता है 29. All these are your prime numbers. Okay, so let's take 7. 7 is divisible by 7 and 7 is divisible by 1. Okay, 7 1 the 7, 1 1 1 7 the 7. ठीक है, सिर्फ दो ही फैक्टर्स है इसका. So it is your prime number. Okay, I hope it's clear. Prime number क्या है, composite number क्या है. It's written here only two factors. Two factors क्या क्या है, एक तो फैक्टर होगा 1, सेकेंड होगा the number itself. इसमें कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, क्या प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है. वेरी सिंपल. आई होप इट्स क्लियर. ओके, so now the important thing that we need to know, okay, that they might ask in your examination is one, क्या ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है. ओके, आंसर मी दिस. इज वन ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? टेल मी. The answer is very simple. One is neither prime nor composite. Okay, one जो है वन नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाई इज नंबर वन नॉट प्राइम. देखिए वन का कितने फैक्टर्स है, वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज वन. बट फॉर प्राइम नंबर वी नो दैट वी नीड टू हैव हाउ मेनी फैक्टर्स, टू फैक्टर्स. दैट इज वन होना पड़ेगा फैक्टर, और सेकंड फैक्टर वो खुद नंबर ही उसका फैक्टर होना पड़ेगा. बट वन इन वन केस there is only one factor. Okay, so one is neither prime nor composite. They might ask you in your examination. Okay, note it down. One is not even prime, one is not even composite. ठीक है. So one more question that I need to ask is smallest composite. Which is the smallest composite number? Come on, answer me this. Which is the smallest composite number? चलिए चलिए आंसर करो. कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉल कौन सा होगा? आंसर इज 4. रिमेंबर 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, बिकॉज 2 इज योर 2 इज योर प्राइम नंबर, 3 इज योर प्राइम नंबर, 1 तो हम लोग कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 2 3 के बाद क्या आएगा 4. 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 is divisible by 1. It has 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 1, and 4 is divisible by 4. Okay, itself. So it is divisible by so many, what to say? It is divisible by so many numbers. Okay, so hmm, so 4 क्या होगा? Composite होगा, and it's the smallest composite number. I hope it's clear, right? So this is the definition of prime number, the number greater than 1 that has exactly two factors, 2 as well as the number, two factors. Okay, that is 1 and the number itself. ठीक है, दो factors होना पड़ेगा, prime numbers का two factors होना पड़ेगा, एक तो 1 होगा और एक the number itself. Okay, it's clear. These are the 1 and 2, 2 का फैक्टर है, 3 का 1 and 3, ओनली टू फैक्टर्स. 5 का अगर हम लोग देखें तो थर्ड प्राइम नंबर, दैट इज 1 and 5. अगर हम लोग 7 का बात देखें तो 1 and 7. ओके, दिस आर योर प्राइम नंबर्स. आई होप इट्स क्लियर. अगर ये क्लियर है देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स. ओके, दिस इज अ शॉर्टकट टू फाइंड प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आपको कैसे ढूंढना है? ओके, सपोज अगर कोई छोटा एक नंबर हो गया, सपोज आई विल गिव यू अ स्मॉल नंबर दैट इज योर सपोज 13. ओके, 1 3. You can easily tell me that हाँ 13 is not prime. I mean 13 is prime, right? Why it is prime? Because it has only two factors, that is एक तो खुद ही है 13 और एक है 1. ठीक है, so you can easily tell me. But what if the number is large? Okay, सपोज क्या होगा, नंबर बहुत लार्ज है. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सपोज योर 161. कैन यू टेल मी इट्स प्राइम और नॉट? बता सकते हैं आप? It's quite difficult, right? If the number is large, so it's quite difficult to know whether it's prime or not. So in some cases, what we do, okay, just check the
नेबर नंबर जिसका हम लोग का स्क्वायर रूट पता है, वो स्क्वायर रूट इज नोन टू अस। ओके, वी नो 169। ओके, 169 इज योर 13 स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर क्या होगा आपका 169 होता है, वी नो दिस राइट। सो 13 के पहले जितने भी प्राइम नंबर्स है दैट इज योर 2, 3, 5, 7, 11। Okay, all the prime numbers that above 13, okay, we need to consider those numbers। अभी 2 से इसका divisibility चेक कीजिए, 161 का 2 से नॉट डिविजिबल। 3 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, नॉट डिविजिबल। 5 से कीजिए, नॉट डिविजिबल। 7 से कीजिए, 8 इज डिविजिबल, राइट। विथ 7 इट इज डिविजिबल। सो इसका फैक्टर्स क्या क्या निकल गया, एक तो 7 आ गया, एक 1 आ गया, एक 161 खुद आ गया। सो इट इज हैविंग 3 फैक्टर्स, सो दिस इज नॉट योर प्राइम नंबर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, इसी टेक्निक में नाउ you need to tell me about the number 171। this is your homework। okay, this is your homework। you need to answer me whether 171 is a prime number or not। ठीक है, you'll be telling me 171 is prime number or not। okay, so this one is your homework। just comment me down the answer। okay, now let's take another example। okay, ताकि आपको तो और थोड़ा clear हो जाए। 101। okay, 101 we need to check whether it's prime number or not। 101 के पास क्या है, 100 है, we know 100 means your 10 square। okay, 10 square, so we need to check the numbers before 10। okay, prime numbers before 10, that is 2, 4, oh sorry, why I'm writing 4, that is 2, 3, 5, 7। ओके, इतना ही दिखना है। 2 से क्या 101 जाता है, नहीं जाता है। 3 से क्या 101 जाता है, नहीं जाता है। 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं जाएगा। सो 101 इज अ प्राइम नंबर सिंस इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, एक तो है 1 एंड द सेकंड फैक्टर इज खुद द नंबर 101। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। This is very interesting. Co-prime or relative prime। I think you have not discussed this in your school। Co-prime और relative prime क्या होता है? Co-prime numbers और relative prime numbers क्या होता है? Tell me, what is co-prime or relative prime? Let me help you with the help of an example। Let us take 2, 3। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा। ये 2 और 3 जो नंबर हम लोगों ने लिया है, ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे 2 भी डिविजिबल होता है, 3 भी डिविजिबिलिटी होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज योर 1, राइट। 1 से हम लोग 2 भी डिविजिबल कर सकते हैं, 3 भी डिविजिबल कर सकते हैं। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर is your 1। okay, so in this case these two numbers are known as your co-prime numbers। okay, so let me give you one other example। 5, 7। okay, check for 5, 7। इनका क्या होगा, इनके बीच कॉमन जो होगा वो सिर्फ 1 ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। okay, so it is your co-prime। did you get the point? Let me give you another example। 9, 15। okay, 9, 15। okay, 9 किससे डिविजिबल होता है, 9 और 15 किससे, 9 3 से डिविजिबल होता है, 15 भी 3 से डिविजिबल होता है ना। इन दोनों में 3 से डिविजिबल होता है। 3 3 3 is 9, 3 5 is 15। ओके, ये दोनों का HCF is not equal to 1। okay, in such a case 9 and 15 is your not co-prime। got the point? co-prime क्या होता है, co-prime क्या नहीं होता है, right? You got the point, right? So co-prime numbers are those where the common factor is only 1। let me give you another example। 9, 11। 9, 11 क्या होगा आपका, co-prime होगा या prime होगा, नॉन co-prime। 9, 11
9, 11. I'm not talking about the date. I'm talking about this number. Okay, come on, check the number. 9, 11. इनका 3 से 9 जाता है, पर 11 नहीं जाता है. Okay, so they are also co-prime numbers. Okay, इनका highest common factor is only 1. So they are co-prime number. Okay, so the homework for you is you need to tell me whether 2 comma 4 is a co-prime number or not. This is your homework. You need to tell me whether they are co-prime or not. 2 and 4. Okay, I need the answer. अगर आंसर देंगे तब then I will come to know that you have seen the full session. Okay, co-prime. Just remember one thing. Okay, just remember, write in notes. Okay, that write in the notes that there's something very important. All consecutive numbers are co-prime. As for example, 1 comma 2, 3 comma 4, 8 comma 9. जितने भी कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, देखिए 1 कॉमा 2 में देखिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. 100, 101, इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, राइट. इन सच केसेस, ओके, all the consecutive numbers are your co-prime numbers. Okay, write this in note. Okay, very important. All the consecutive numbers are your co-prime numbers. Okay, I hope it's clear. So let's move to the, okay, so here is the definitions of co-prime numbers. Okay, co-prime numbers are also known as relative numbers. Okay, we have already discussed co-prime numbers are also known as your relative numbers, right? They are also known as your relative numbers. Are two integers that have no common positive integer divisor other than one. One से और कोई other factor नहीं है, right? So these are your co-prime numbers. So check here. Let us consider the pair of co-prime numbers 8 and 15. 8 में क्या है? 1, 2, 4, 5 से 4 से divisible होता है, 8 से divisible होता है. 15 का देखिए 1, 3, 5, 15 से होता है. ओके, दे डोंट हैव एनी एचसीएफ, दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट. सो दे आर योर को-प्राइम नंबर. ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वही लिखा है इसमें. जस्ट गो थ्रू द रीडिंग वंस. ओके, so now let's discuss about twin numbers. Last thing, okay, that we'll discuss in today's session. What to understand by twin number? Twin number क्या होता है? Okay, suppose we have two co-prime numbers. Okay, suppose we have, well, let's take an example of two. Let's take an example of 2 and 3. We have two co-prime numbers. Okay, what will be the difference of this numbers? Difference क्या होगा इसका? 3 minus 2 equal to 1. 1 आएगा, है ना? लेकिन let's take another twin number, another co-prime numbers, that is your 5, 7. Okay, इनका difference क्या आएगा? 7 minus 5 equal to 2. Okay, in such cases where the difference between the two co-prime number is 2. ओके, जब 2 मिलेगा को-प्राइम नंबर, अगर हम लोग दो को-प्राइम नंबर्स का डिफरेंस चेक करें तो अगर 2 मिलेगा, then they are known as twin prime numbers. Okay, then they are known as, in that case they are known as your twin prime numbers. Okay, जैसे कि 2 और 3 के केस में देखिए, they are not twin. Why they are not twin? Because the difference is only 1. Okay, अगर 3 minus 2 करें हम लोग को 1 मिलेगा. Let me take another example, that is your suppose 17 comma 19. Okay, let's take example of 17 comma 19. 19 minus 17, what will we get? We'll get 2. Okay, we are getting 2, that is, it is a twin prime number. Okay, I hope it's clear. So that was all for today's session. Okay, I hope you really enjoyed the session. इसको रिवाइज कीजिए आराम से, जो जो दो होमवर्क दिया है, इजी होमवर्क दिया है, वो आप कंप्लीट कीजिए. ओके, वी आर एट द वेरी बिगिनिंग. ओके, वी आर बिगिनिंग ऑफ नंबर सिस्टम. थोड़ा इजीली हम लोग देख रहे हैं अभी, धीरे 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 हम लोग विल मूव टू द हार्ड लेवल. सो आई होप यू एंजॉय टू दिस सेशन. अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो यू कैन कमेंट. ओके, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो.
Bye bye.